Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of Comparing Quantities. This is first question of its exercise 8.3. So the question says that tell what is the profit or loss in the following transactions. Also find profit percent or loss percent in each case. So part A is gardening shears bought for rupees 250 and sold for rupees 325. So हमें cost price given है CP is equal to 250 rupees and SP selling price is equal to 325. So selling price ज़्यादा है, so of course यहाँ पे profit होगा. So profit is equal to SP minus CP. Cost price, selling price minus cost price is equal to 325 minus 250 is equal to 75 rupees, and profit percent is equal to प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू 75 अपॉन 250 इंटू 100. जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से 73 टाइम, सो हो जाएगा हमारे पास 30%. Part B is a refrigerator bought for rupees 12,000 and sold at rupees 13,500. सो हमें सीपी गिवन है, cost price 12,000 and selling price 13,500 rupees. So selling price ज़्यादा है, so of course यहाँ पे profit होगा. Profit हो जाएगा हमारा 13,500 minus 12,000 is equal to 1,500. So profit percent हो जाएगा हमारे पास is equal to 1,500 upon 12,000 into 100. So 20 से 20, then 10 से 10 cancel out, 3 से cancel out हो जाएगा 50 टाइम, 3 से 12 4 टाइम, 4 से 50 cancel out हो जाएगा 12.5 टाइम. सो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा हमारे पास 12.5%. नेक्स्ट पार्ट सी इज a cupboard bought for rupees 2,500. So cost price CP is equal to 2,500 and selling price is at 3,000. ऑब्वियस यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट is equal to 3,000 minus 2,500 is equal to 500, and profit percent is equal to profit upon cost price into 100. So 500 से 2,500 5 टाइम and 5 से 100 20 टाइम, so then हमारे पास 20%. And part D is a skirt bought for rupees 250. So CP is equal to 250 and SP is equal to sold at rupees 150. सो हमारा सेलिंग प्राइस कम है, सो ऑब्वियस यहाँ पे लॉस होगा. सो लॉस इज इक्वल टू 250 माइनस 150 इज इक्वल टू 100, एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से 100 4 टाइम, सो हो जाएगा हमारे पास लॉस परसेंट इज इक्वल टू 40%. थैंक यू.